Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to another one of my video. और आज I am going to share with you guys my night care routine. These are all the things that I use. सबसे पहले I'm just going to tie my hair back. Okay, so the first step is cleansing. I wear makeup daily routine में leaves a lot of residue on my skin. इसीलिए सबसे पहले what I do is cleanse my face. I don't do it daily actually, but I do on days जब मैं बहुत ज़्यादा makeup करती हूँ. I try to cleanse it and I use Beautify by amna's cleanser. Weekly cleansing के लिए I use another cleanser and we'll talk about that एक और वीडियो में. But for this video I'm just gonna share things I use daily. मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. फेस वॉश के साथ जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप what I do is clean my eyes. वाटर जो मैंने इस छोटी सी बॉटल में डाल दिया हुआ है और हम इसको वेट करेंगे. रोज़ वाटर इज़ द सेफेस्ट थिंग आई बिलीव जो आप अपनी आँखों के पास यूज़ कर सकते हो. सो येस आई यूज रोज़ वाटर टू क्लीन माई आइज़. अपनी आँखों के अंदर भी डालती हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि रोज़ हमारे आँखों में इतनी ज़्यादा डर्ट जाती है. कीप योर आइज़ क्लीन, रियली गुड फॉर एंड सेफ फॉर योर आइज़. टी ट्री टोनर बाय बॉडी शॉप इस कॉटन बड पे लगा लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा बिकॉज ये सिर्फ आई यूज़ दिस फॉर माई टी जोन ओनली. टोनर दैट इज़ बाय द क्लिनिक लाहौर एंड दिस वन स्मेल्स रियली गुड. तरह से जेल फॉर्म में है. वर्क्स ऑन योर पोर्स एज वेल एज हाइड्रेट योर स्किन एट द सेम टाइम. ये मैं अपने पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ. आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्किन केयर रूटीन फॉर अ वाइल नाउ. has changed my skin a lot and I really believe that you should always invest in good skincare products because जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतना ही कम आपको उसके ऊपर मेकअप लगाना पड़ेगा. That's what I believe in. टोनर लगाने के बाद I'll wait a few seconds स्किन के अंदर absorb हो जाए and the next step is thermal mist by Beautify by amna. This hydrates my skin a lot and I use this. इससे next वाला जो step है उसके लिए आपकी skin hydrated होना is very important. Give it a few minutes कि ये मेरी skin पे settle down हो जाए. I use this hyaluronic acid is by Mizon. ये I believe एक Korean company है. This one I discovered जब मैं search कर रही थी internet पे. Good brands इनके products बहुत अच्छे होते हैं. So yeah, I discovered this and you can use any other hyaluronic acid by any other company, even the ordinary. But reviews काफ़ी अच्छे थे, so I thought I should give it a try. I have not yet used ordinary का कोई भी product, so I have no idea कि वो कैसे हैं. I'm loving this one. और इसको मैं अपनी स्किन में रब नहीं कर रही हूँ, मैं इसको मसाज भी नहीं कर रही हूँ. I'm just slightly, very lightly tapping it on. I think this is the best way to deal with any kind of liquidy product. You have to let it sink in your skin. एंड ये करने के बाद आप कोई सा भी वाइटामिन जो विटामिन सी या कोई भी सीरम आप यूज़ कर सकते हो. जो मेरा विटामिन सी सीरम करंटली ख़त्म हुआ है. द नेक्स्ट सीरम दैट आई यूज़ आई क्लिनिक लाहौर. दिस वन, दिस इज़ देयर स्किन वाइटनिंग सीरम. आई हैव अ रियली नाइस फ्रेगनेंस. इसको भी मैं टैप करूँगी एंड जैसे पिछले प्रोडक्ट को हमने अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा टाइम दिया था, वैसे ही इसको भी अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्क्रबिंग माई लिप्स. यूज़ दिस ओरिफ्लेम की लिप बाम. आप कोई भी वेस्लिन या कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिप स्क्रब सा आई डोंट नो आप इसे क्या कहते हो. आई हैव नो आइडिया बट आई टेक दिस बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है और लिप्स पे इट डजंट लिप्स को बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट नहीं करता. सो आई जस्ट रब इट ऑन माई लिप्स. आई क्लीन इट विद अ कॉटन पैड. आई बिलीव डे के एंड पे आपने अगर लिपस्टिक वगैरह ऐसा कुछ भी लगाया होता है तो इट जस्ट स्टेज ऑन योर लिप्स. और बाय डूइंग दिस, ये वाला स्टेप करने से आप you get rid of all that lipstick. Now coming to the next step, eye cream product by Mizon. ये उनकी Snail repair eye cream है. Absolutely love this cream so far.
or under eyes and the lid of your eyes. These are very sensitive areas and I believe कि इनको moisturize करना is very important. So it kind of moisturize your under eyes. It also helps slow down the process of aging. I use this finger because इस finger का pressure सबसे कम होता है and I just lightly tap under my eye and over my eyelid with this. I know लोग rub करते हैं. I just do not like doing that. I feel like कि वो करने से आपकी skin ज़्यादा bother होती है. So this is just what I do. I dab it in my skin and I let it do its magic. ये eyes में अच्छे से absorb हो जाए. जिसके बाद what we will do is moisturize. So one thing that has absolutely changed and helped my skin is this Hydra Boost Gel Cream by Neutrogena. I absolutely love this one. I like products जो कि gel based होते हैं. I don't know, I have a thing for gel based products. I feel वो आपकी skin को बहुत ज़्यादा oily नहीं करते हैं and it just works really well with my skin. Mostly it is what you discover. आप different products use करते हो और discover करते हो कि कौन सा product आपकी skin के साथ ज़्यादा अच्छा जाएगा. This is something that I actually massage on my skin. Do not forget your neck. Okay, अगर आप चाहो तो आप इस step पर छोड़ सकते हो because it's almost done. But I just like to moisturize my skin a lot, so I put another moisturizer that is by Laneige or Laneige or something like that. It's a sleeping mask और ये भी is a gel kind of thing into your skin and then dab it. Okay, now we're pretty much done. इसके बाद अब use castor oil, लेकिन अभी आप भी कुछ अर्से के लिए मैंने वो बंद किया हुआ है. The last but very important step is lip mask. I use this lip sleeping mask by Laneige, I believe, and it looks something like this. इनका berry flavor है, which is absolutely amazing. I bite my lips a lot, I chap them, so yeah, you need to moisturize your lips. Last thing which I do, you really don't have to do it. I have this thing where I have to smell good all the time. I use this body mist by Body Luxuries. This is their black vanilla. I absolutely love this. I just put it all over me. That's it. ये मेरी स्किन केयर रूटीन है जो मैं रात को सोने से पहले थोड़ा सा टाइम अपनी स्किन को देती हूँ and it has helped me a lot. Suggest कि आप भी करें. हर किसी को करना. स्किन इज़ समथिंग जिसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए. अगर हमारी स्किन नेचुरली अच्छी होगी वी वोंट रियली नीड कि हम बहुत सारा मेकअप लगाएं एंड आई फर्मली बिलीव जितना कम मेकअप लगाया जाए उतना अच्छा है डेली रूटीन में. सो या दिस इज माई स्किन केयर रूटीन और आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे. अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है तो यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन के साथ काम करते हैं. आई हैव सेंसिटिव स्किन with combination. If these work for me, they can work for anyone. Also, I have a code with Beautify by Amna and the Clinic Lahore. तो अगर आप इनके कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. I hope you guys like this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है don't forget to subscribe, like, comment and share the video. आपकी encouragement, आपका support मुझे इनकरेज करता है और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आई विल कम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.